Okay, very good morning to all of you and welcome back. So let's begin the day's proceedings. Now we are more or less done. We are more or less done with vectors. So probably now it's time to get to the next discussion, and that is on motion in one dimension. Okay. So our first discussion is motion in one dimension. So therefore, whatever we are going to discuss today, okay. Okay. Good morning messages from Ara, Varna, Aditya, Priyank. Thank you. Good morning to all of you. In fact, again, motion in one dimension. One dimension means what? A straight line. Now, straight line does not mean vertical or horizontal. It could be anything. So it could be a straight line like this. It could be a straight line like this, or it might be even a straight line in an incline. As you know, that is also a possibility. But whatever it is, there is no curve. So it's a straight line. So one dimension means a straight line. So whatever we are going to discuss in this particular chapter, okay. Morning, Saurav. Whatever we are going to discuss in this particular chapter will be in the context of a straight line and straight line alone. So that's a restriction, you might call it, or you might also call it as a constraint or a foundation. Okay. When it comes to the different terms that we are supposed to be aware of while discussing motion, they are, of course, time is there. Then you have position. Okay. So then you have position. Then you have displacement, distance, speed, acceleration. We might also use another term, and that is called as jerk. Okay. Let me first of all get you the notation. Notation means each of them will have some kind of a representation by some alphabet, and that is the notation. Some of them have a standard alphabet, some of them we are going to use on our own. So it will be a mutually decided thing. There is no standard alphabet as such in books generally. But yes, we will discuss it with the alphabet that we are going to choose now. One question before we set off, and that is from Saurav, and that is it without, no, is it with constant acceleration or without? We'll actually have discussion of all types. Maybe the acceleration is constant, maybe the acceleration is variable, whatever the case is. We'll discuss everything. Okay? But let's start. So time, obviously, there's a standard notation. Okay. Time, of course, has a standard notation, and that is T. Position, we are going to use the alphabet X. Displacement is a standard one. That's S. Actually, there is no particular, alphabet which is specifically used for distance. So what we are going to use is L. Now, L means what? Actually, what is distance? Distance is length of path. So length is there. So like let's call it as L. That will be a good way to represent. Speed. Even for speed also, there is no specific notation as such in books. So what I'm going to write is L dot. Okay. Now let me mention something here in this context, and that is, whenever we differentiate something with respect to X, there is a shorter way of writing it, and that is F dash. So if I write F dash, it means differentiation of the function F with respect to X. So that's F dash, df upon dx. But sometimes we also differentiate with respect to T as well. So there the notation changes slightly. We're going to call it as df dt as F dot. This is actually the standard notation. So I'm going to use F dot and df dt. So these are the standard notations which is generally used. Now what is speed actually? Speed is actually rate of change of distance. So speed, if you look at carefully, speed is actually rate of change of distance. So like speed is equal to rate of change of distance. Not exactly displacement, mind. Okay, so speed is rate of change of distance. I'm talking about the definition. Okay.
with respect to time, of course. So therefore, speed is equal to dl by dt. So I think perfect for writing is L dot. So therefore, for speed, we are going to use this as the notation, that is L dot. This is the standard notation that we are going to use. Velocity, of course, we have a standard one, that is V. Acceleration is also a standard one, A. Jerk, well, again, there is no standard notation as such, but then I have to use A dot. Actually, what is jerk? Jerk is actually rate of change of acceleration. That is how jerk is defined. Rate of change of acceleration. Okay, that's the definition of jerk. These are the basic terms that we are going to use. Okay. Now let's discuss a little bit about the features of each of them, and then possibly move on to questions, formulae, equations, all those stuff. Right. So I'm going to rub this off because these are the standard ones. You know that already. Now let's start. Okay, can somebody define position? What do you exactly mean by position? Anybody? Position. The position vector of the particle from the origin. Okay, that means to describe position, we need something that is the origin. We generally call origin as some kind of a reference frame, which means actually a coordinate system. Okay, so therefore, position is always with respect to a reference frame, and that describes the location of a particle with respect to that reference frame. That is what is the idea of position. Why not go specifically? Okay, Priyank has given the same thing in a little different wordings, and that is a specified point with respect to a reference. I think that's well done, no issues. Let me go to specific people. Aryan Tomar, can you define displacement? Aryan Tomar, can I have you on air? And please be a little active so that we can get across quickly. Yes, Aryan. Yeah, sir. Displacement is the shortest distance between 2 points, which a object or something can travel. Okay, when you say 2 points, you leave those 2 points slightly undefined. So whenever there's a definition, the definition should be so robust that nobody should be left in doubts. I mean, it's like which 2 points? A starting and ending point. I think that's much better then. So therefore, displacement will be the shortest distance from the initial to the final point. Okay, but this is a definition word in words. Can we define it more mathematically? Sir, the final position vector minus initial position vector. That's right. That means displacement is actually with respect to position. So displacement is basically change in position. Okay. And whenever we talk about any change, it is actually what? Final minus initial. Isn't it? So that's how. Okay, let's look at now distance. Distance, of course, is the length of path. So let me define it myself. Let's look at the comparison. And that I'm asking with respect to a straight line, mind you. So our discussion is only with respect to a straight line. Fine. So can I have a Hardik here? Can you tell me the relationship between distance and displacement for any particle? Yes, Hardik. Mind you, we are discussing only straight line. Distance will always be greater than displacement. Distance will be always greater than displacement? Or equal to. Okay, so like distance will be always greater than or equal to displacement. Now, can you tell me when is this equal to and when is this greater than? Yes, Hardik? Sir, if a particle takes the same path as in the shortest, if the particle travels on the shortest path between the initial and final point, then the distance and displacement will be equal. But if the particle takes any other path than the shortest route, then the displacement. So what do you mean by any other path? Because I have defined that it is only a straight line. So it's not that somebody will go along a curve, because we are sticking to only motion in one dimension. So whatever we are discussing is with respect to motion in one dimension, that is in a straight line. Yeah, now go ahead. So it's not that somebody is going along a curve and somebody is going along a straight line. It is only straight line itself. So then what is the relationship? Sir, if a particle travels, like a distance and then changes direction and comes back, then
I think that is the way to answer it. Now you're right. And that is, whenever particle changes direction, distance will be greater than displacement. And if it does not change direction, okay, then the magnitude of distance and displacement will be equal. See, mind you, I have not drawn any vector. That means what we are meaning is only magnitude. Okay. So greater than is a particle changes direction. This is a very specific question, Sami. Chalo, theek hai. Speed, as you know, is rate of change of distance. I have already defined it. Okay. And velocity. Now, when you talk about speed, velocity, there are actually two terms which are used. One is instantaneous and the other is average. Okay. So, Nikunj, can I have you on air? Nikunj Kumar. Can you tell me the difference between instantaneous and average speed or velocity or whatever you want to define? Yes, Nikunj, can I have you on air? The instantaneous speed or velocity is the speed or velocity at that point of time. And the average speed or velocity is the total speed. No, एक minute. At that point, तो चलो समझ में आ गया. So that is instantaneous. Can you go over the average one again? The average speed can be defined as the total distance covered in the total time taken. So that is the way to define. Not that it is dependent on the speeds and so on. Yes. It is the total distance by total time. If you are asking average speed, and it is total displacement by total time. If you are asking about average velocity. Chalo, ठीक है. Please be on air again, Nikunj. Is that, let's say if I want to compare instantaneous speed and velocity, how do they compare? And let's see if I want to compare average speed and average velocity, how do they compare? To answer one of them, and that is the instantaneous speed and velocity. How do they compare? Nikunj, instantaneous speed and velocity, how do they compare? Yes, Nikunj, do you have an answer to this? Instantaneous speed and instantaneous velocity, how do they compare? Okay, let me have somebody else then. Dhruv Kamboj, instantaneous speed and instantaneous velocity, how do they compare? Dhruv? Yes? Okay, Arav has said that they are equal. Dhruv is still undecided. Okay, Sankalp, can you answer this? Instantaneous speed and instantaneous velocity, how do they compare? Sankalp? Yes, sir. Yes, how do they compare? Sir, instantaneous मतलब sir specific point पे, average मतलब वो पूरा total time पे. That is done. That has been already answered by Nikunj. I mean, what I am asking is a different question. That is, at any moment, how does the instantaneous speed and the instantaneous velocity compare? Sir, there are some answers which are coming up already, and that is the. Line, हाँ, बोलो. Straight line में होंगे तो equal होंगे. अच्छा, अगर straight line में नहीं होगा तो? तो सर difference हो सकता है. Okay, difference हो सकता है. चलो, let me put it this way, that you know what is instantaneous velocity really? Instantaneous velocity is an additional information other than the instantaneous speed. The direction is also an additional information. That's how instantaneous velocity is different. So if you look at magnitude wise, I will repeat, if you look at magnitude wise, instantaneous speed and instantaneous velocity, they will be equal. Okay? So magnitude wise, they will always be equal. So, L dot instantaneous will be always V instantaneous mod. See, speed instantaneous will always be positive, so there's nothing to do with that. But velocity instantaneous sometimes can be represented by positive as well as negative. So therefore, just to avoid that, so like I'm putting a mod about it. Otherwise, if you look at the magnitude, they are always equal. Okay. One final question, and that is to Shaurya Chaudhary.
Shaurya Chaudhary, how does average speed and average velocity compare? Shaurya Chaudhary. Sir, average velocity is total displacement by time and average speed is total distance by time. Okay. No. How do they compare? Sir, speed is always greater than or equal to velocity. Okay, and which cases, I mean, is the equal and unequal? Sir, if distance is greater than displacement, then speed is greater than velocity. That way, you're shifting the question from one question to another question. So, like, you have to clear it here itself. Sir, if the object doesn't change direction, then speed will be equal to velocity. And if it changes direction, then... That's it. That's more than sufficient. Chalo, take it. In the meanwhile, let me read out something because there are some questions also coming up. Saurav has asked कि distance तो होता है dl by dt और v तो होता है ds by dt. ठीक है ना? तो magnitude तो दोनों का बराबर हो. बिल्कुल. Akshay has asked why did you put a mod on the velocity? Actually देखो होता क्या है कि कई बार ना हम लोग velocity के साथ साइन लगा देते हैं. जैसे अगर कोई बंदा इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसको +10 लिख देते. कोई अगर इधर जा रहा है तो -10 लिख देते. तो अब -10 और उधर स्पीड तो 10 है दोनों केस में, तो कहीं तुम दोनों को इक्वेट ना करो. तो इसलिए जस्ट फॉर सेफ्टी हमें दिस इज व्हाट आई हैव डन. बट अदरवाइज अगर मान लो तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हो इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज डन. हमें सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो. ठीक है ना? एवरेज में वही रिलेशन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर तब होगा अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. तो माइंड यू वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन. अगर कर्व्ड है the average speed is always greater than average velocity. ये ऑलवेज की बात. जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या है, कभी इक्वल भी होता है और कभी एवरेज स्पीड ज्यादा भी होता है. कब ज्यादा होगा? जब डायरेक्शन बदलेंगे, जैसे आगे जाके पीछे आ रहा है, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड विल बी मोर देन एवरेज वेलोसिटी. पर मान लो अगर सिर्फ सामने ही चले जा रहे हैं, in that case average speed और average velocity दोनों बराबर होंगे. यानी no change in direction, the average speed or average velocity बराबर. So I think the relationship is the same between this L and S. So therefore I can say L dot average is equal to V dot average का magnitude, है ना? ये मैं magnitude बार-बार इसलिए mention कर रहा हूँ because sometimes you miss that out and equate with minus also. इसलिए कब होगा? No change in direction. और जहां change in direction हुआ, फिर यहाँ पे greater than लग जाएगा. Average speed will be more. ठीक है? I hope Akshay now have got the thing. I mean, as to why I'm writing all these small things. So acceleration is rate of change of velocity, है ना? तो rate of change of velocity. तो क्या मैं acceleration के magnitude को लिख सकता हूँ as rate of change of speed? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ फिर कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब मैं कह रहा हूँ क्या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? yes or no? This time it's an open question, anybody can answer, so I would prefer you write a message to answer this. Okay, Priyanka said yes in a straight line. Shaurya says yes without any condition. Okay. Okay, Kritika says, can you repeat the question? Arav says, what is the question? See, the question is that, can I say this? Magnitude of acceleration is equal to rate of change of speed. Okay, Arnav. Okay, Aditya has given another answer, and that is no, because speed may remain constant, but velocity still may change. Aditya Bhatia said, I think no. Saurav has said, is it 1D? Let's stick to 1D. Motion in one dimension के chapter में ही हम लोग discuss कर रहे हैं ये वाला. Okay, let me make it like this. That you know what? You know what? So there are some more answers coming up. I'm just reading them. Arav says variable होगा. Aditya says कि direction is constant. Saurav says कि हाँ straight line में चलेगा. Aditya says yes.
Isa says yes in a straight line and no change in direction. Okay. Let's make it like this. That you know what? Whenever you talk about acceleration, it has two causes. One is change in direction and the other is change in magnitude. And both are equally important. So if the speed is, let's say, constant, even then also there could be a scope of an infinite acceleration. You might say infinite acceleration. Let us say a wall is there. A body goes with 10 meters per second, hits the wall, and comes back with, suppose, same speed of 10 meters per second. So the speed did not change. It's an instantaneous phenomenon. But the direction did change. So therefore, in a straight line, if the direction is not changing, then you can write magnitude of acceleration is equal to rate of change of speed. That you can do if there is no change in direction. But the moment there is a change in direction, you cannot do that. So even within a straight line also, there is a restriction. कि अगर change of direction नहीं हो रहा है, तो in that case मैं लिख सकता हूँ. तो straight line के अंदर हमेशा नहीं होगा, but कभी-कभी होगा. या mostly होगा. कब होगा? But this is where direction does not change. That's more or less the qualification for acceleration magnitude to be equal to rate of change of speed. Okay. Jerk, as I said, is like the rate of change of acceleration. So that's another step ahead. That's more or less a short discussion on various terms. I mean, what are their features and all. Okay. Let's move on now. Let me give you a question. Suppose I say that I have to start from A and my destination is point B, and let's say this is 20 kilometers is given. And I'm traveling by train. You know what? There's a difference between Arnav said that if a ball is moving along the vertices of a triangle with constant velocity, then will it be accelerated motion? Well, see, if it is moving along a triangle or the sides of a triangle, I think you are hitting vertices, but I think probably what you meant is sides. If you are traveling along the sides of a triangle, velocity cannot be the same always. Why? Because once you will travel along one side, then you will travel along another side. So even if the speed is constant, yet velocity will not be constant because you have changed the direction. So when you are traveling within a side, of a triangle, and the velocity magnitude is not changing, then of course it won't be accelerated motion. But if the magnitude of the velocity is changing, that means it will be accelerated motion. So like it all depends on. But yes, if the particle is continuously traveling along the sides of a triangle, its velocity cannot be uniform. Once in this direction, then the direction changes, then the direction changes, and then it repeats. So therefore, there is a change in direction. And as I said, acceleration has two causes. One is change of magnitude, and the other is change of direction. So that's all. Chalo. So like this is A and B. Let's say the distance is suppose 20 kilometers. Okay, so distance is 20 kilometers. It is given that I'm traveling by train, and the maximum change in speed. So let's say home and then college. So I'm going to the college, something like that. Maximum change in speed of the train every second is equal to 1 meter per second. That is given. So question is find minimum time. That's the question. Go ahead. No hint, no discussion. Solve on your own with the basis of whatever information has been given. Go ahead. मान लो मुझे घर से कॉलेज जाना है और वो है 20 किलोमीटर, डेस्टिनेशन दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, और जिस ट्रेन से जा रहा हूं मैं, देखो ट्रेन का स्पीड बहुत जल्दी नहीं बढ़ता, जैसे स्कूटर है ना, कार वार का स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाता, ट्रेन का इतना जल्दी नहीं बढ़ता. So let's say the distance is 20 kilometers and the maximum change in speed of the train every second is supposed to be 1 meter per second. Question is find the minimum time taken. Chalo, all giving the same answer. Chalo, again, I think probably what you're doing is that because the speed is changing by maximum of 1 meter per second,
So I think probably that's why we are interpreting that the acceleration must be equal to 1 meter per second square. And we have all those formulae. B is equal to u plus 80, s is equal to u2 plus half 80 square. So I think obviously we'll be using s is equal to 0 into t plus half 80 square. So t will be equal to under root of 2s by 8. So therefore, t will be equal to under root of 2 into s. S is like 20 kilometers. So 20,000 by A is 1. So I think that will give you a cool answer of 200 seconds. Shikhar has given 10 upon 3 seconds. Well, that's pretty fast. 10 upon 3 seconds is just 3.3 seconds. Sir, अच्छा तुमने शायद 20 मीटर ले लिया हो. sir, हाँ जी बेटे. सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू टी, एक्सेलरेशन 1 है तो फिर v को dv by dt लिख सकते हैं, dt को उधर लेकर जाके इंटीग्रेट कर दें. तो इंटीग्रेशन वगैरह आप देखो, इंटीग्रेशन तो हम तब करेंगे जब थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो. एकदम बेसिक क्वेश्चन में हर जगह इंटीग्रेशन लगाने क्या मजा है. इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा. अगर मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ कुछ वेरिएबल डाल के, तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा. सो लेट्स वेट फॉर दैट, बट लेट्स नॉट जंप द गन कि इतने आसान क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं. Okay, but then I would like to point out something else, and that is this question's answer 200 seconds is not correct. In fact, think more and try to get the correct answer. 200 नहीं है. अभी तक मेरे ख्याल से I think around 12-15 answers have come. Every answer is 200 seconds. एक 10/3 आया था, but I think that was more of a mistake kind of thing. I mean, probably. ठीक है ना? 200 नहीं है. देखता मैं 200 आया कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर्स आए 200 सेकंड्स के, और एक 10/3 है. तो चलो 10/3 तो शायद कुछ सिलेबस टेक हुआ होगा, presumably. Yeah, so go ahead. ये ठीक है सर. शिखर, this is not the correct answer, so like think on the correct answer. अब इसमें क्या गलत हुआ हो. Okay, Priyank has given the answer. Priyank has now changed the answer to 400 seconds. Double कर दिया. क्यों भाई double के पीछे क्या logic? Well, let me now discuss the thing. Okay, the thing is that in this particular case, if you look at carefully, okay, if you look at carefully, okay, now people are starting to increase the seconds. I mean, somebody made it 40,000 seconds and so on. Aditya Bhatia. Okay, I will tell you where the thing is going wrong is that, see, everybody is assuming that the acceleration has been pressed. So the accelerator has been pressed, so the speed is continuously increasing. But tell me one thing, will the speed continuously only increase? How is it possible? How can the speed only go on increasing? Because if that is the case, because what was my question? My question was that I'm going from home to college. So I have to also drop down at the college. Isn't it? So therefore, what you have to do is, you have to apply maximum acceleration, no problem. But you also have to apply maximum brake as well, so that the at least train stops there. Otherwise, do expect that the train is running at full speed and I will jump off from the train. Possible है ना? यहीं पे गड़बड़ हो रहा है. यानी अब हम इसको इस तरह से मानेंगे कि आधे टाइम तक फुल एक्सेलरेशन लगा और आधे टाइम तक फुल ब्रेक लगा. That's what the thinking of the question should be. I hope now you're getting it. ठीक है? आधे टाइम तक पूरा एक्सेलरेशन और आधे टाइम तक फुल ब्रेक. And that's how you will be able to do it. So therefore, आधे टाइम तक फुल एक्सेलरेशन मतलब 10 किलोमीटर तक फुल एक्सेलरेशन. तो टोटल टाइम अगर t होता है, ये हो जाएगा इक्वल टू t/2. आई माइट से आधा वाला टाइम आपको कैसे पता चल रहा है? तो ये सिमेट्री से बता रहा हूं मैं, बिकॉज द मैक्सिमम चेंज इन स्पीड, अब चेंज इन स्पीड बोला, इंक्रीज नहीं बोला. यानी चेंज इन स्पीड मतलब इंक्रीज में भी 1 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम होगा और डिक्रीज में भी 1 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम होगा. हाँ, अगर ये अलग होता तब क्वेश्चन में फिर रीथिंकिंग करना पड़ता, बट दैट विल डू लेटर ऑन. अभी इसको तो लिखा है. यानी अब हम लिखेंगे s यानी 10 किलोमीटर is equal to half a will be 1 है ना, into
t by 2 होल्स, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, यानी t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 48 80,000 का अंडर, ये तो 100 आएगा और 2 रूट यानी इक्वल टू, यानी t इज इक्वल टू 200। This is what will be the answer. So the correct answer to this question will become 200 into root 2 seconds. ठीक है ना? So that's what the answer will be. Just have a look. Okay. Now in this question, one advantage was that एक सर benefit एक बार वो सिमेट्री वाली बात वापस से बता दीजिए। हाँ देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, क्योंकि मुझे ना ट्रेन को सिर्फ एक्सेलरेट नहीं कराना है, मुझे ट्रेन को ब्रेक भी कराना है, और दोनों में वैल्यू सेम दे रखा है। तो ऑब्वियसली जितने देर तक एक्सेलरेट करूंगा ब्रेक भी उतना ही देर लगाना पड़ेगा। क्यों? ये जरा सोचो, अगर मैं 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करता हूं तो स्पीड 1 2 3 4 करते करते 10 मीटर पर सेकंड पहुंचता है। अगर 10 मीटर पर सेकंड को जीरो करना है तो फिर 10 सेकंड लगेगा, क्योंकि रिडक्शन भी 1 मीटर पर सेकंड हो रहा है। हाँ, अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग होता तो फिर अलग हिसाब होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या है कि जितने देर तक तुम एक्सेलरेट कराओगे उतने ही देर तक तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एंड में स्पीड जीरो नहीं हो पाएगा। And that's where you have to think of. So therefore, t will become in this case equal to 200 root 2 seconds. Check. तो मैंने क्या किया, टाइम यहां तक का t है तो ऑब्वियसली आधे जर्नी का t by 2, तो आधा जर्नी अगर है तो 20 किलोमीटर का जो 10 किलोमीटर कर देता हूं, और वहां पे इक्वेशन यूज कर सकते हैं। Now you might say, what about the second stage? सेकेंड स्टेज में सिमेट्री से बराबर करके मैं डबल करूं, तो इसलिए मैंने t नहीं लिया, देखो यहाँ पे मैंने t by 2 लिया। So that is taking care of that second stage as well in a indirect way. ठीक है ना? So you get t is equal to 200 root 2 seconds. I hope you are getting it. Now, however, you might say अगर मान लो अलग है तो, है ना? तो अलग है तो क्या करेंगे वो देखिए। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन था, सपोज आप मैं इसको चेंज कर देता हूं कि मैक्सिमम acceleration is suppose alpha and maximum brake is suppose beta, or s distance travel करना। Question is minimum time। अब हम इसको जनरलाइज कर, अब हम इसको सीधा जनरलाइज कर, then what will happen? Now अक्षय just asked कि लेकिन ये टाइम तो आधे टाइम का निकाला, आधे डिस्टेंस का निकाला। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, आधे डिस्टेंस का तो निकाला, लेकिन जो टाइम है वो तो मैंने पूरे का लिया ना t, तो आधे डिस्टेंस का t by 2, तो सॉल्व तो उसी से ही हो जाएगा ना। फिर हमारा हमने आधे डिस्टेंस का इक्वेशन लिखा, और उस इक्वेशन में जो टाइम है वो पूरे टाइम का आधा है, तो फिर पूरे टाइम ही तो आएगा इक्वेशन सॉल्व करके। वही तो क्या मैंने देखा t by 2, तो इसलिए ऐसे नहीं है कि तुम बोलोगे तो आधा ही जर्नी आपने देखा, दूसरा आधा तो देखा ही नहीं। दूसरा आधा इन टर्म्स ऑफ टाइम मैंने ऑलरेडी हिसाब कर लिया। इन एनी केस हमें टी सॉल्व हो क्या आ रहा है, तो टी तो पूरे टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिखा है बेटे, मिनिमम टाइम, डिस्टेंस कवर करना है मुझे एस, यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे स्टॉप, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा, मैक्सिमम ब्रेक बीटा, फाइंड द मिनिमम टाइम। Go ahead. Actually, ब्रेक का मैग्नीट्यूड बीटा है, ठीक है ना? तो लाइक while equation because acceleration will become then minus बीटा, तो अपने आप देखो, that you to look at yourself. This is what is asked by देवादत्ता कि ब्रेक के लिए क्या फिर हम माइनस बीटा लेंगे ना? देखो ब्रेक बीटा है, पर अगर ब्रेक के दौरान एक्सेलरेशन बोलते हो तो वो माइनस बीटा होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है ना? तो that's all. चलो अब आगे बढ़ो और सॉल्व करो। चलो सम आंसर्स आर कमिंग अप अगेन। ओके, इस बार पता मैं क्या करूंगा, इसका ना ग्राफ बनाऊंगा, v और t, तो अल्फा बीटा, ठीक है? तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है वो कैसे होगा? देखो यहाँ पे जो स्पीड होगा, लेट अस से ये t1, सपोज ये t1, तो अल्फा अगर मान लो एक्सेलरेशन होगा तो यानी इसका स्पीड क्या होगा, u प्लस ए टी, तो a बोलते हैं अल्फा, t बोलते हैं t1, यानी यहाँ का जो स्पीड होगा
वो होगा अल्फा T1 और ब्रेक का जो टाइम है वो है लेट्स से T2। तो ब्रेकिंग का क्या होता है, इनिशियल स्पीड यानी अल्फा T1 माइनस 0 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा। माइनस बीटा नहीं है, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिया। ये देखो इनिशियल माइनस फाइनल, इससे क्या होगा, T2 आ गया इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू T1 आ गया। देख लो फाइन। ओके, तो अब ये अल्फा T1 है और है ना, तो ये आ गया, तो T2 आ गया। अब देखो T1 के टर्म्स में, अब देखो ये जो T2 आ गया ये हो गया अल्फा बाय बीटा इंटू T1। अब इसका जो एरिया होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यानी S इज इक्वल टू पूरे का एरिया, एरिया बोलते बेस, बेस बोलते T1 प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू T1 है ना, अगर T2 हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज अल्फा T1। ठीक है, देख लो तो इससे क्या होगा, T1 आ, तो T1 स्क्वायर आ गया, तो ये तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा 2 इंटू T1 इज इक्वल टू 2 इंटू S इंटू बीटा बाई 2 इंटू S इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये T1 देख लो। तो T1 आ गया, तो T2 इज इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बाय बीटा, तो क्या हो गया, बीटा बाय अल्फा की जगह अल्फा बाय बीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हमसे तो टोटल टाइम पूछा जा रहा है ना, हमें तो टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 है ना। तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इसमें तो मुझे दिख रहा है कि 2s बाय अल्फा प्लस बीटा कॉमन है ना, देखो 2s बाय अल्फा बाय बीटा कॉमन, यानी 2s बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या निकला है ना, अंडर रूट में बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा। ठीक है, तो क्या होगा अल्फा बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, यानी क्या आ गया ना, अंडर रूट ऑफ 2s अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये होगा टोटल टाइम। That's if you want to add. सर वो ऐड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। हाँ, वो लेकिन वो रूट के अंदर भी था ना। हाँ तो सर वो स्क्वायर तो नहीं फॉर्म करेगा। अच्छा, सॉरी, यानी इसमें आ रहा है बेसिकली अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है ना, एक अल्फा प्लस बीटा ऊपर और एक अल्फा प्लस बीटा नीचे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ऑफ बीटा अल्फा बीटा, तो अंडर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई करो इससे, तो यानी अल्फा हो गया, अंडर रूट ऑफ बीटा इससे मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और रूट के अंदर भी एक अल्फा प्लस बीटा था, है ना, तो वो कैंसिल होके ये बन, तो देखो फाइनल आंसर आ गया 2s इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। सर यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा भी तो हो सकता है, तो हो सकता फिर मैंने उससे किया है तो मतलब मेरा भी करेक्ट हो सकता है। नहीं, देखो दैट इज कंडीशनल, ये हो गया जनरल, है ना, ये जनरल हो। अक्षर जस्ट सेड कि कैन यू रिपीट दिस वन इन शॉर्ट। एक्चुअली देखो मैं ये कह रहा था कि अल्फा थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन कर रहा है, फिर बीटा का रिटार्डेशन कर रहा है और अल्टीमेटली रुक जाता है, तो यही है। इस टाइम को हम दो हिस्से में डिवाइड कर ले, एक T1 का एक्सेलरेशन, T2 का ब्रेक। तो एक्सेलरेशन अगर होता तो वेलोसिटी आ गया यहाँ का v इज u प्लस at, तो u तो 0 है, at बोलते हैं अल्फा T1, तो यहाँ का वेलोसिटी आएगा अल्फा T1। ब्रेकिंग में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम T2।
वो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग दे रखा बीटा, तो देखो बीटा का मैग्नीट्यूड, तो उससे क्या होगा ना T2 इन टर्म्स ऑफ T1 आ गया, है ना। तो इससे क्या होगा ना, ये T2 और T1 आ गया, और हमें पता है कि एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे निकाला, हाफ बेस, बेस बोलते हैं T1 प्लस T2, है ना। तो T1 प्लस T2 मींस दिस, ये हो गया T1 प्लस T2 बोलते हैं अल्फा बाय बीटा इनटू T1, ये देखो इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या अल्फा T1, ये देखो अल्फा T1 दैट हैज टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उससे क्या होगा ना T1 आ गया, और T1 को अल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करो तो T2 भी आ गया। हमें चाहिए T1 प्लस T2, तो दोनों को ऐड कर, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो इसको कंबाइन करके फिर फाइनली दैट्स द जनरल आंसर, कि कुछ भी अल्फा हो कुछ भी बीटा हो, तो इन दैट केस तो सिमेट्रिकल होगा नहीं। जैसे अगर इक्वल ब्रेक और इक्वल एक्सीलरेटर होता है तब तो आधा आधा टाइम पे ब्रेकअप हो जाएगा, मतलब आधा आधा टाइम पे डिवाइड कर सकते। बट मान लो ज्यादा ब्रेक है या कम एक्सीलरेशन है, या ज्यादा एक्सीलरेशन है कम ब्रेक है, देन यू कैन डिवाइड द टाइम इनटू हाफ। इन दैट केस ज्यादा टाइम हो सकता है एक्सीलरेशन पे लगे कम ब्रेक पे लगे, या ज्यादा टाइम ब्रेक पे लगे और कम एक्सीलरेशन पे लगे। इट विल डिपेंड ऑन हाउ द वैल्यूज आर गिवन, किसका वैल्यू ज्यादा है। जिसका वैल्यू ज्यादा है उस पोर्शन का टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो उस पोर्शन। तो अगर एक्सीलरेटर ज्यादा ब्रेक कम है वैल्यू वाइज, तो एक्सीलरेटर का टाइम कम होगा और ब्रेक का ज्यादा टाइम। So those things can be adjusted, I mean, or have been adjusted, and that's what has given me the final answer, which is equal to, okay, which is equal to T is equal to under root of 2s into alpha plus beta upon alpha beta. Okay. Chalo, so that was about your acceleration, brake, and so on. In fact, that is just an introduction to what exactly is happening. You know, these equations are also usable in vertical motion. Okay? Before I use it for vertical motion, I would like to have a small discussion. Okay, Saurav has asked, can you repeat exactly was alpha beta निकला कैसे, मतलब slope कैसे है निकाला? नहीं बेटे, slope तो हमने निकाला नहीं है ना, हम तो बस ग्राफ देख के ये फॉलो कर रहे थे कि अगर मान लो T1 टाइम तक एक्सीलरेट करता है अल्फा, तो वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u तो 0 है, a बोलते हैं अल्फा है, और t बोलते हैं T1 है, यानी वेलोसिटी कितना हो गया अल्फा T1। तो यहाँ का वेलोसिटी क्या है, मैंने इसके अल्फा T1 लिखा, बस इतना ही किया मैंने। और ब्रेकिंग का जो टाइम है उसको मैंने T2 ले लिया, ठीक है ना, T2 ले लिया। तो ब्रेक बोलते बीटा, ब्रेकिंग का क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम, ये T2 हो गया मान लो टाइम। तो इनिशियल बोलते हैं अल्फा T1 माइनस फाइनल, फाइनल इज 0 बाय T2, दैट इज बीटा, है ना। तो बीटा कितना होगा अल्फा इंटू T1 बाय T2, ठीक है। तो उससे क्या होगा T2 आगे कितना ना अल्फा बाय बीटा इंटू T1, ये देखो लिखा है T2 इज अल्फा बाय बीटा इंटू, और फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी के टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ। तो दोस आर लाइक मोर ऑफ मैथमेटिक्स देन एनीथिंग एल्स, है ना। चलो तो जो मैं कह रहा था दैट वर्टिकल मोशन में बट यू नो आई वुड आल्सो एनकरेज एवरीबॉडी, देखो ऑनलाइन में ना कई बार हमें पता भी नहीं लगता है कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया। तो therefore it is also imperative that at your end just type across a line or two as a message कि ये वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए, समझा दीजिए वगैरह, but otherwise it's very difficult to get across. I don't know what you are thinking, what you're getting, you are not getting. So therefore to maintain the communication also to understand what you are understanding and not understanding, क्योंकि उससे ना फिर मैं भी अपना लैंग्वेज को मॉडरेट कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है सब कुछ वैसे ही समझ में आ रहा है तो then I will also rush through, फिर हम इतना ज्यादा समझाएंगे नहीं, फिर हम तो जस्ट बोलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पर अगर मुझे लगता है नहीं यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा समझने में वो है, then obviously I will also moderate the language accordingly so that all the concepts are picked up a little slowly. तो ये इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा एक्टिव रखना, ठीक है। चलो vertical motion, so let me ask a few questions now with respect to vertical motion. First of all, who will answer it? Vaishnavi, can you be on air? Vaishnavi? Yes, sir. Yes, sir.
Can you now tell me about acceleration due to gravity sign of G? Yes. So what's your comment on the sign of G that is supposed to be taken during vertical motion? Go ahead. Sir, the sign of G is always negative because it is downward, and according to our condition, upwards taken as positive and downwards is taken as negative. So according to you, G should be always taken as negative? Yes, sir. Okay. But I have a query here and that is, you know what? If you look at the G, okay, if you look at the G, value-wise, if you throw something up, the value goes on decreasing. But if you throw something down, the value goes on increasing. So if it is always minus, then somewhere it seems to be that there is a contradiction. So what is the explanation? Sir, because when something is coming downwards, the velocity is also negative and the G is also negative. That's why the velocity keeps on increasing, but with the negative sign. Okay. I think that's perfect. What Vaishnavi said is right. So if anybody else had a different opinion other than what she's saying, so we need to change that. I only asked her, so like I cannot go and ask many people. I mean, so the thing is, the sign of G, okay, the sign of G is decided by the convention that we take, and mostly we take upward direction as the positive direction. Now this is what we take mostly. If that is the case, then G is always negative. However, at times, due to question and all, we sometimes take this as the positive direction. So downward direction is positive. In that case, G is always positive. Just in case somebody had this idea कि ऊपर जाते हुए G का साइन अलग होता है और नीचे जाते हुए G का साइन अलग होता है, प्लीज चेंज दैट. क्योंकि G का साइन ऊपर जाना और नीचे जाने से कोई मतलब, इनफैक्ट कोई भी क्वांटिटी का साइन जाना और आने से कोई मतलब, किससे मतलब है? कन्वेंशन क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है. तो G का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड्स, क्योंकि एक्सेलेरेशन किस वजह से होता है? फोर्स के वजह से होता है. और फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है. किस डायरेक्शन में लगा रहा है? Always downwards. So I can say only one thing about G's direction, and that is it is always downwards. Now whether that downwards is positive or negative will depend on your convention. So if your convention is upward direction positive, which is what we take mostly, then G is always negative. Don't get bothered about whether it is traveling up or down, just doesn't matter. Same here also, if the convention is the downward direction is positive, then G is always positive. So that's what the value of G is. And that's how it has to be taken. सौरभ ऐसे कि नहीं वो एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन वाले में क्या ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं हो सकता है? क्या ग्राफ से करना है? ये ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं ऐसे विजुअलाइज कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने दिखाया कि देखो ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है और ट्रेन का स्पीड घट रहा है. That was just for visualization. Otherwise, it was entirely mathematical. The graph, even if I would not have drawn the same mathematics, calculations, equations, the same would have happened in spite of that. So, like, don't connect to the graph as such too much. चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, so you can probably do it directly. I mean, and that is, suppose I throw a stone from some height, and that height is suppose equal to 135 meters. Okay, and the stone has been thrown with a speed of 30 meters per second, so it's going to go up and then come down and hit the ground. The question is, find the time required for stone to hit the ground. That's the question. Find the time taken by the stone to reach the ground. Obviously, it will travel up and then come back by the same path and fall here. They started here but fell here. Go ahead.
Okay, Prasuk has given almost immediate answer 9 seconds. Devadatta has given 3 seconds. 3 seconds नहीं आएगा बेटे. Saurav Kumar 9 seconds and so on. That's right. I think that's right. Arav, Arnav, Aditya, Shaurya. Everybody's given the same answer. There is 9 seconds and 9 seconds is the correct answer. That's right. इस केस में मैं इक्वेशन तो ये यूज करूंगा. S is equal to ut plus half at square. स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है और एंडिंग यहाँ पे हो रहा है. तो अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. स्टार्ट एंड तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली -135. So this will become -135 is equal to u. U is 30 into t plus half into -10 into t square. तो मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ. तो यानी t square minus 6 times t minus 27 is equal to 0. I think that's now a simple equation to solve. So t minus 9 into t plus 3, okay, is equal to 0. T is equal to -3 and t is equal to 9. Now, therefore, t is equal to 9 is the accepted solution. सर एक डाउट है. हाँ बेटे. सर ये t equal to 9 गलत होना चाहिए सर आंसर, क्योंकि सर हम 135 मीटर का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से फेंक रहे हैं तो सर जो डिस्टेंस होगा और ऊपर और ज्यादा ही बढ़ेगा क्योंकि और ऊपर ट्रैवल करेगी बॉल, नॉट ओनली 135 मीटर. सुन लो सर बेटा. देखो ये जो इक्वेशंस है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s. So let's clear the matter कि एक चीज है क्या. So you continue बेटे. तुम सवाल पूछ रहे थे ना. Who was that? Arav या somebody else? Anubhav. Anubhav ये बताओ कि v क्या है? सर वेलोसिटी सर, फाइनल वेलोसिटी. Okay, final instantaneous velocity. Yes. u की initial instantaneous velocity. Yes sir. Acceleration a uniform होता है into t. ये s क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट. Displacement. So while calculating displacement, do we care या do we bother as to whether it has traveled up and down or whatever? So displacement is only initial to final. So initial and then final. That's it. But I would like to wind up this small discussion with you with a question also, and that is, can we use these equations everywhere? Yes, Anubhav. Can we use these equations everywhere? Sir, constant acceleration. That's it. That means there has to be a constant acceleration, and only then can we use it. So therefore, there should be uniform, or you can say constant acceleration, and then only we can use it. And in this case, we are presuming that the acceleration is uniform. So it doesn't matter whether the object is going up or down. Look at acceleration. Acceleration is change in velocity. Change in velocity throughout is -10. How? If you have thrown it with 30, you know what's after 1 second it will become 20. So change is -10. After that, 10. Change is -10. After that, after 1 second, 0. So change is -10. After that, it will become -10 velocity. So from 0 to -10. So the change is still -10 only. Just because direction has changed does not mean that the equation is now starting to get invalid. No. Because the validity of the equation is not with respect to velocity. The validity of the equation is with respect to acceleration. Acceleration constant होना चाहिए. क्योंकि इस केस में है. अब तो acceleration due to gravity को constant लेके चल रहे हैं. Of course, we are neglecting all those air resistance वगैरह वो सब तो चलो छोड़ दो. तो साइड में रखो फिलहाल. We are only taking ideal cases. So in that ideal case, equation is done. No problem. Okay. So yeah, Priyank, you are right. You also said the same thing, and that is these equations can be used only when the any acceleration is constant. Nothing to do with initial velocity, final velocity, whatever. That will decide as per the acceleration. So we are not really bound for that. Okay. Chalo, so that was about this. But I have a question to ask, and that is, यहाँ पे क्या और भी तरीके से कर सकते हो ना? एक और तरीका है, and sometimes you might prefer that also. Let me give you that. And that is, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट को u velocity से थ्रो करते हो, तो देखना इसका टाइम यहाँ तक लगता है u by g. कैसे? v is equal to u plus at में v को 0 कर लो तो देखना टाइम आता है. And not only that, the height is equal to u square by 2g. कैसे? ना ऐसे को ut plus half at square में है ना, या v square u square plus 2as में v को 0 कर लो, u तो u है ही है, और a की जगह -g पुट कर लो, देखना s यानी हाइट आ जाएगा.
and that will be equal to u square by 2g and time is equal to u by g. हो गया? That's first. Second thing is that if you drop something from let's say height h, तो यहाँ पे उसको आते हुए जो टाइम लगता है वो है अंडर रूट ऑफ 2h by g. कैसे? तो ऐसे को ut plus half it square यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुमने इसको ड्रॉप किया है तो u 0 हो गया, तो देखना उससे t आता है. Not only that, just before striking the ground, इसका जो velocity होगा that will be equal to under root of 2gh. ये भी देखना उसी से सॉल्व हो जाता है. b square u square plus 2h से जस्ट पुट करो, आंसर सॉल्व हो जाता है. अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में. In that case केवल इक्वेशन फॉर्मेशन बच जाएगा. I can do that. कैसे? देखो पहली बात तो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, यानी ऊपर जाते हुए टाइम कितना लगेगा u by g, यानी यहां तक का जो टाइम है वो तो हो गया 3 सेकंड. नॉट ओनली दैट, हाइट क्या होगा u स्क्वायर बाय 2g, यानी 30 का स्क्वायर बाय 2 into 10, तो 900 by 20, that's 450 by u square by 2g means so 900 by 20, that will become 90 by 2, that is 45. So this will become 45 meters. और ये दे रखा है उन्होंने 135, यानी वापसी में कितना आना है 45 plus 135 है ना, यानी 180 मीटर वापसी में आना. ऐड करो देखना 180, तो वापसी का टाइम कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h by g, so 2 into 180 by 10 and that is equal to 6 seconds. यानी ऊपर जाते हुए 3 सेकंड, नीचे जाते हुए 6 सेकंड, यानी टोटल कितना हो गया 9 सेकंड. That way you can bypass all those quadratic equations and all. तो यानी इस क्वेश्चन के लिए तो चलो अलग मेथड भी अलाउड है, बन सकता है कि यहाँ वाला पार्ट को अलग कर लो और वापसी के जो जर्नी है उसको अलग कर लो. तो ऊपर जाने का जो रास्ता है उसमें 3 सेकंड लगा और जो नीचे जाने का जो वो है उसमें 6 सेकंड लगा, तो ऐड कर दिया 3 + 6 9 सेकंड. That's also a way to get the answer. See, therefore a question can be approached in a variety of thought processes or ways. I mean, it all depends on your practice and experience, which will lead you to a particular method of solution or solving that particular question. It's experience ही करेगा, ठीक है? But I'm just trying to get you experience of all kinds so that you are able to handle it properly. ठीक है ना? Okay. I'm suppose now asking about the displacement in the nth second. Now it's actually a direct formula, but I'm not wanting to give the direct formula. Let me derive it quickly. So this is actually equal to displacement n seconds minus displacement in n minus 1 second. Now n seconds is ut plus half at square minus ut plus half a t square. That's equal to un plus half an square minus un plus u, ठीक है ना, minus half an square plus n minus half a. Actually, if you look at most of the terms actually get cancelled, or rather many of the terms get cancelled. The un gets cancelled, half n square gets cancelled. So what you are left is u plus a by 2. So this is the displacement in the nth second wala form. ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन दूंगा. And that is, suppose मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मैं एक्चुअली फेंक भी सकता हूं, तो मैंने ड्रॉप किया, चलो कोई नहीं. And in the last second, it is traveling, suppose 65 meters, 75 meters. ठीक है, तो find the height from where it was dropped. Find h from where it was dropped. Yeah, go ahead now.
Pratham is given 1345, Arnav 320. Now 320 is becoming more common. Akshay just asked, please repeat the question. Question ये है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बॉडी आ रहा था, आखिरी सेकंड में 75 मीटर कवर, 75 मीटर्स कवर, आखिरी सेकंड में. तो क्वेश्चन इज कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया गया. That's what the question is. Okay, now all the answers that are coming up are 320 meters. Saurav, Balak, Shikhar, Pratham, Arnav. Pratham पहले तुम्हारा आंसर अलग था वैसे, पर चलो कोई नहीं. शौर्य, आदित्य, आद्य, प्रसुप, ठीक है ना, मान्य. So now everybody is giving the same answer, and that is 320 meters. All the answers that are now coming up are 320 meters. तो इसको करने का यही तरीका होगा कि आखिरी सेकंड में, यानी कोई भी nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो कितना होता है. हाँ, इस केस में तो दिया है इन्होंने 75 is equal to u is 0, ड्रॉप किया गया, plus a by 2. Now in this case we are taking downward direction as positive. Now you might say क्यों अगर मैं upward direction positive तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है. It is just that क्योंकि लास्ट सेकंड में ऐसे कवर किया गया तो इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी g पॉजिटिव हो जाएगा. तो a by 2 into 2n minus 1 है ना, तो है ना 5, so 5 will go as 15, तो यानी n is equal to 8 है ना. 2n minus 1 is 15, तो 2n होगा 16, तो n हो गया 8. यानी ये पार्टिकल 8 सेकेंड लगाया है ऊपर आने, सॉरी नीचे आने. तो अभी हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना कि जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h by g, यानी h क्या हो गया, हाफ gt स्क्वायर. सॉल्व करो, ये आएगा है ना, तो बस दैट्स इट. तो h इज इक्वल टू हाफ g t square, and that is equal to 320 meters. So more answer has come up. Even Priyank has now given the answer as 320 meters. बिल्कुल सही बात, ठीक है. So what we were discussing was some kind of like a displacement in the last second. तो last second का displacement 80 था, sorry 75 था. तो उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया कि कितने हाइट से इसको गिराया क्या होगा, and that turned out to be in this case 320 meters. So I think it's not that we have run out of time, but it's just that we are reaching the fag end of our time. I mean, like not much time left for discussion beyond this. कल हम लोग mainly करेंगे graphical analysis. So like tomorrow we will be focusing more on graphical analysis, where we will be taking up questions related to different kinds of graphs. और graphs हम लोग बहुत सारे बनाएंगे. When I say different kinds of graphs means many different kinds of graphs, which will be there in our agenda. VT graph, ST graph, this graph, that graph. Actually, जो हमने quantities list किए थे, अगर याद करके देखो वो क्या थे? Time, position, displacement, distance, speed, velocity, acceleration. अब बता सकते हो इसमें कितने ग्राफ्स हम बना सकते हैं? तो let that be the question to wind up. इस इनको यूज करके कितने ग्राफ्स बना सकते हैं? Okay, Akshay will ask you, what do you mean by n is equal to 8? देखो, n is equal to 8th second is the last second. ये निकला है ना, u plus a by 2 into 2n minus 1, ये वाला इक्वेट करके. तो n is what? The last second. तो अगर last second होता है 8th second, तो ये टोटल 8 सेकंड लगा है. तो 8 सेकंड में जितना नीचे गिरा है वही हाइट होगा. तो वही हमने कैलकुलेट किया है ना. s is equal to half g t square. That turned out to be 320 meters. ठीक है. चलो, प्रथम says 21, Priyank says 7 factorial, Mian says 21, Graphs, Sankalp says 21, Aditya says 21. That's right. Actually क्या है, ये जो 7 quantities है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quantities है, और कोई सा भी 2 quantities choose कर लो तो एक ग्राफ बनता है. तो देखो, the answer will become equal to 7c. That is equal to 21 graphs. ठीक है ना. तो 7c2 का मतलब हो गया 21 ग्राफ्स. तो एक्चुअली में भी हम लोग 21 ही ग्राफ्स बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, and all those are things that we'll be taking up tomorrow. Fine.
Chalo, that's it for today. We'll continue tomorrow with graphs. So see you tomorrow and have a nice discussion on graphs. But all that is like lined up for tomorrow. Fine. Chalo, okay, that's it for today. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir.